हेलो गुड इवनिंग। तो आज आम डिस्कसन करवा गोटे नुआ टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ टाइप्स एंड हाउ टू रीड देम। ओके, तो ये जो कंटेंट गुड़ाक जहाँ मुझे बनवाक चाहूँगी जहाँ मुझे अपलोड करी मोस्टली इन ओडिया लैंग्वेज। ओके, बिकज मु चाहूँगी जे जमी आम ओडिया भाई भौणी मैंने भी निज लैंग्वेज प्रति प्राइड फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे। कारण कथा आमको जहाँ भी यूट्यूब रे कंटेंट मिले ना मोस्टली एदर हिंदी ना इंग्लिश रे मिले। तो हायर एजुकेशन रो कौन वीडियो ओडिया लैंग्वेज रे प्रायतः रिलेटेड टू एमबीए और पीजीडीएम ए सब कोर्स रिलेटेड रे मिले। तो मु चाहूँगी कि एमबीए रिलेटेड कोर्स बा सब्जेक्ट गुड़ा को ओडिया रे आपण मानक पढ़ेबो। जदि मोर ट्राएटा आपको भल लगे तो लाइक करेंगे। ओके, देन आम ए टॉपिक उपरू जा दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आम गोटे कंपनी क्या कहवा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहले आम कौन बुझे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन ना जोटा कि कन्वे करे क्या कौन जनाए आमको, दैट इज द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। आम बिजनेस केमती परफॉर्म करुची एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल फील्ड रे तार परफॉर्मेंस कौन मींस केते तार इनकम जनरेट होची, केते तार सेल्स होची, केते तार प्रॉफिट होची, ता कैश फ्लो केमती अछि, सब विषय रे हम डिस्कशन करियो पूरा बिट बाय बिट। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। Financial statements are often audited by government agencies, accountant, firms, etc. to ensure accuracy and for tax, financing or investing purposes. ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ବି कंपनी हो, ଯେକୌଣସି ବି institution हो, ସେମାନଙ୍କର ऑडिट हुए गोटे स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम रे सेमानकर ऑडिट हुए। कौन पे ऑडिट हुए? जे तांकर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जहाँ भी अच्छी सेमानकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस केमती अच्छी, सेमाने टैक्स ठीक से दउचंती कि नहीं, बुझी पारुछन। तो ये सब जिनस इनश्योर करिया पे सेमानकर ऑडिट करे। तो ऑडिट रे तांको ऑपरेशन को देखा जाए नहीं, तांकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ही देखा जाए। ओके, फॉर प्रॉफिट प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करे मन रखिबे। व्हाट आर कम्स अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जदि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहबा ता अंडर रे कौन कौन जिंस आसी जीवो। द थ्री मेन इंपोर्टेंट थिंग्स आर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ओके, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ता साथे आउ गोटे ऐड हेकि आसे जहां को हमें कोन को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एटा हमें सेपरेटली डिस्कस करिवा। बट मोस्टली जो तीनटा जिंस आसे ना, बैलेंस शीट आसे, इनकम स्टेटमेंट आसे और कैश फ्लो स्टेटमेंट आसे। इज इट क्लियर? नॉन प्रॉफिट एंटिटीज यूज ए सिमिलर बट डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो ए पर्यंत हमको कौन बुझिबा कसला जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन हमें बुझिले एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर रे कौन कौन आछी। फर्स्ट आछी बैलेंस शीट, देन आछी इनकम स्टेटमेंट, तीन नंबर आछी कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड चार नंबर आउ कौन आसे ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी रे से कंपनी रो कौन कौन इक्विटी स्ट्रक्चर रे कौन कौन चेंजेस होची। इज इट क्लियर? अच्छा, एबे हमें डिस्कस करिबा व्हाट आर द की टेकअवेज। गोटे बीट पॉइंट रे हमें कौन कौन बुझिले ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड दैट कन्वेज द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विटी एंटिटी। सरला जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमहु कौन करे रिटन रिकॉर्ड थाए जहाँ की बिजनेस एक्टिविटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी को हमको कन्वे कराए। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ए स्नैपशॉट इन टाइम। गोटे कंपनी रो बैलेंस शीट देखले हमको कौन कौन जिंस जाना पड़िबो। कंपनी रो एसेट केते अछि, कंपनी रो लायबिलिटी केते अछि, शेयर होल्डर मानकर इक्विटी ता देरे केते अछि, ए सब हमको गोटे स्नैपशॉट रे मिल जिवो। हमको एते लंबा चौड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िया नहीं, केवल 2-3 पेज रो बैलेंस शीट देखि दियो सब जाना पड़ जिवो। तो बैलेंस शीट रे कोन हम डिटेलली डिस्कशन करिबा। देन इनकम स्टेटमेंट कोन देखिबा। द इनकम स्टेटमेंट प्राइमरीली फोकस ऑन कंपनीज रेवेन्यू। कहा ऊपर इनकम स्टेटमेंट डिपेंड करे मन रखिथिबे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। गोटे पर्टिकुलर पीरियड रे से कंपनी रो रेवेन्यू केते अछि और तार एक्सपेंसेस केते अछि ता ऊपर ही गोटे कंपनी रो इनकम स्टेटमेंट डिपेंड करे। केवल बिट बाय बिट एतिके आपण मन रखिथांतु। जेतबेला हम डिटेल रे जिबा तो आ विषय रे पूरा डिटेल रे बैलेंस शीट रे कोन कोन कंपनी रसला पूरा डिटेल से हम डिस्कशन करिबा। Once expenses are subtracted from revenue, the statement produces a company's profit figure called net income. अच्छा, net income कौन? जेमती आमे कहू जे आमे एते टंका अर्न कले, हमर रेवेन्यू एते आसिला, बट से रेवेन्यू रो हमर एक्सपेंस केते हला जदि आमे ताकू सब्सट्रैक्ट कर दबा त हमर कोन आसीबो प्रॉफिट फिगर आसीबो, जाको आमे नेट इनकम बोली कहू। गोटे कंपनी रो नेट इनकम केते ना, तार जो इनकम जो तार रेवेन्यू जनरेट हला ता द्वारा हम एक्सपेंसेस को सब्सट्रैक्ट कर दबा। The cash flow statement measures how well a company generates cash to pay its debt obligation, funds its operating expenses and funds investments. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको कौन कहला
देखो इनकम स्टेटमेंट रो तो से डिटेल्स मिल गला, कैश फ्लो स्टेटमेंट रो हमको डिटेल्स कोन मिलिबो दे हाउ वेल ए कंपनी जनरेट कैश, केते भलो से गोटे कंपनी कैश जनरेट करि परछि कोन पई टू पे इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। गोटे कंपनी जति लोन आनी छि तो ताकू सुजिया पई जेमिति हेले ताकू पैसा रोजगार करिया पड़िबो। तो गोटे कंपनी जतोले पैसा जनरेट करे तो केते हेल्दीली से पैसा जनरेट करि परछि, केते इजीली से पैसा जनरेट करि परछि, केते भलसे से पैसा जनरेट करी डेब्ट ऑब्लिगेशन को सैटिस्फाई करि परछि। दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट टोल्ड अस। देन फंड इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तार ऑपरेटिंग एक्सपेंस को केमति कंपनी फंड करूची, एंड फंड इन्वेस्टमेंट, तार इन्वेस्टमेंट कंपनी जो करूची तो केते केते तादरे प्रॉफिट केते होची, केते इन्वेस्ट करूची, ए सब जिंस हमको कोथरो मिलिबो ना कैश फ्लो स्टेटमेंट रो मिलिबो। ओके तो मन रही गला बैलेंस शीट रो हमको कोन मिलिबो, इनकम स्टेटमेंट रो कोन मिलिबो, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रो कोन मिलिबो। नेक्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी रो स्टेटमेंट हमको कोन शो कराय ना हाउ प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड विद इन ए कंपनी फॉर फ्यूचर ग्रोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल पार्टीज। देखो गोटे कंपनी रो जतबेला हमें नेट इनकम बाहर कर देला तो नेट इनकम जहां ही बढ़ला दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। बट किंतु कंपनी कोन करे से पैसा को कंपनी रो एटा अछि जे कंपनी नॉट ऑब्लिगेशन, एटा कंपनी रो ऑब्लिगेशन नुहे जे कंपनी पूरा बाध्य नुहे जे जहां भी नेट इनकम हैला ताको शेयर होल्डर के भीतर बांटी दबो। कंपनी तार किछि पार्ट को इधर कौन करि परिबो शेयर होल्डर को देखि आ किछि पार्ट को निजे पाखरे रिटेन करि परिबो। कोन पय ना जहां भी तार नेट इनकम और नेट प्रॉफिट वाला से मनी टाकू से कौन करिवो ना तार फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव रे यूज करिवो। माने से पैसा को तार शेयर होल्डर मान को भीतर न बांटी कंपनी कौन करिवो तार ग्रोथ रे ही ताको रिटेन कर दबो। बुझी पारछ तो ए सब जिंस ना ताको हमें कोन को द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अपन कहबे ताल तो शेयर होल्डर को लॉस गला ना, शेयर होल्डर को लॉस हमें जो कंपनी ये जो प्रॉफिट टाको बांटे ना ताको कहते डिविडेंड। बट डिविडेंड बांटिया द्वारा कंपनी रो तो पैसा शेयर होल्डर के भीतर अल्प अल्प बांटी गला। बट सेही पैसा को कंपनी जदि वर्क रे निज ग्रोथ रे इन्वेस्ट करिवो तो कंपनी आहुरी ग्रोथ करिवो। तो कंपनी जदि ग्रोथ कला डेफिनेटली कहार ग्रोथ हला तार शेयर होल्डर करो तो एमती आपण डिविडेंड पाइबे। बट सेमिति कंपनी से पैसा को यूज करिक कंपनी ग्रोथ करिवो तो आपण को पैसा ता सह ग्रो करिवो। तो ए सब जो जिंस अछि ना ए सब आमे कहा थ्रू रे आमे पाइबा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू रे पाइबा। Then understanding the financial statement out भलसे जदि हम पढ़िबा, investors and financial analysts rely on financial data to analyze the performance of a company and make predictions about the future direction of the company stock price। को मानकर एटा दरकार आसे ना फाइनेंशियल एनालिस्ट जो माने इन्वेस्टर रहले से कंपनी रो इन्वेस्ट करिया पूर्व प्रथमे तार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करनते जे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी केमती अछि। बिकॉज़ जो कंपनी फाइनेंशियली वीक से कंपनी के वेले सर्वाइव करि परिबनी, जो कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग तो इन्वेस्टर माइंडसेट ही एमती गोटे जनरेट हो जे ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग इट मस्ट ग्रो से ग्रो करिवो। ओके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ द रिलायबल एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल डाटा इज द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट तो आपण जानछथि प्रति वर्ष जो कंपनी निजर डाटा रिपोर्ट जो पब्लिश करे व्हिच कंटेन्स द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एटा प्रति वर्ष कंपनी कोन करे निज पोर्टल रे अपलोड करे। न्यूज पेपर भी आसे अपन बिजनेस स्टैंडर्ड भी जदि खोलिबे तो तादरे विभिन्न कंपनी रा आसीबो मार्च मास टाइम रे जतोले प्रति कंपनी रा ऑडिट हुए ना तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग रे प्रति कंपनी रा बैलेंस शीट अपलोड हुए से माने पब्लिक को डिस्क्लोज कर देंती निजर एनुअल रिपोर्ट। ओके द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर का द्वारा यूज करा जाय इन्वेस्टर मार्केट एनालिस्ट क्रेडिटर्स टू इवैल्यूएट कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड अर्निंग पोटेंशियल। कंपनी रा फाइनेंशियल हेल्थ केमती अछि एंड व्हाट आर द अर्निंग पोटेंशियल, इज इट फाइनेंशियली स्टेबल और नॉट। तो ये सब जिनस हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो एनालिसिस रो मिली परिबो। द थ्री मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स आर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जे आगुरु ही कहि सारछि। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके एटी गोटे देछि कोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन रिटन रिकॉर्ड दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। जोटा रिटन रिकॉर्ड which convey the business activity and the financial performance of a company is called as financial statement। financial statement under रे कोन कोन सब आसीबे ना फर्स्ट आसीबो हमर बैलेंस शीट, सेकंड रे आसीबो हमर इनकम स्टेटमेंट, थर्ड रे आसीबो हमर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके थैंक यू वेरी मच।